When I say aqueous, it means in water. When I say dilute, it means water is in large amount and solute is in smaller amount. If I say the word NaCl aqueous, and if I haven't written anything along with it, it always means dilute. Because if it's concentrated, we always mention it's concentrated. So let's say it's NaCl aqueous. अब इसमें जो cations हैं कौन से होंगे? So cations will be Na positive and H positive from water. और इसमें anions कौन से होंगे? That will be chloride from salt and OH negative from water. Okay. Now if I have this electrolytic cell, right, ये electrolytic cell है basically positive negative, ठीक है. Now if the solution contains NaCl aqueous, Na positive, chloride, H positive, hydroxide. So I know that both chloride and H positive will attract towards the anode, and both sodium ions and H positive will attract towards the cathode. ठीक. Now what happens? Ions तो यहां भी दोनों गए, वहां भी दोनों गए, लेकिन डिस्चार्ज कौन करेगा? क्योंकि एक वक्त में एक आयन डिस्चार्ज करेगा. So for that we have to learn the reactivity series, the ease of discharge. The ease of discharge. I mean the reactivity series. Let's see of cations, फिर बाद में anions की. Okay. So basically ये cations हैं. मैं इनके charges लिख दूं. Okay. So ये cations हैं basically. इसकी सीरीज आप वेरियस वेज में यहाँ से कर सकते हैं. यू कैन लर्न द mnemonic for these series. Many students have learned the mnemonics. The most educated mnemonic is please send cats, monkeys and zebras in the large hired cages. Make sure guarded it's properly. एक second. Properly. ठीक है ना. तो ये पी से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. ये कॉन्सेप्ट कहता है ये डाउन द सीरीज ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस. द ईज ऑफ डिस्चार्ज increases. It means reactivity decreases. क्योंकि ये सारे मेटल आयंस हैं. जो मेटल्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, तो गेन करते हैं. तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होगा एक आयन गेन करेगा उतना लेस रिएक्टिव मेटल होगा. इसका मतलब तो ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज करता है. जो निचला आयन है वो ज्यादा प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज करेगा than the ion above. So इसलिए basically लेते हैं कि down this reactivity series we say the reactivity decreases. अगर दो आयन्स हैं, एक आयन ऊपर है सीरीज में और एक आयन नीचे है, तो निचला आयन डिस्चार्ज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके डिस्चार्ज करेगा. तो डिस्चार्ज का मतलब क्या? चार्ज खत्म करना.
तो जो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव है. So that's why, down the series, reactivity decreases, ability to discharge increases. The ion below in the reactivity series will prefer to discharge as compared to ion above in the reactivity series. Hired, Samana, it's hired, H-I-R-E-D, large, hired. So cages, make sure guarded properly. Now, when I talk about the anions, that's a smaller one. Sulfate, nitrate, chloride, hydroxide, bromide, iodide. In some books, it is chloride, bromide, iodide, hydroxide. But normally it's chloride, Shim sir, hydroxide, bromide, iodide. Again, the ease of Shim sir, discharge increases down the series. sir, what is for the aluminum? And Ease of discharge increases. बात वही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज. अब ये नॉन मेटल आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद कर रहे हैं, तो ये तो लूज कर रहे हैं फिर, राइट. सो बेसिकली इन केस ऑफ द मेटल आयंस दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्चार्ज. अब मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो उसकी रिएक्टिविटी होती है. इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देगा फिर तो वो लेस रिएक्टिव होगा. सेम गोस फॉर नॉन मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, सॉरी गेन करना पसंद करते हैं. अब यहाँ पे तो उनको लूज करना पड़ेगा फॉर डिस्चार्ज. सो रिएक्टिविटी इन आइदर केस विल डिक्रीज डाउन द सीरीज इन मेटल आयंस एंड नॉन मेटल आयंस. ठीक. नाउ अब मुझे बताएं, सीरीज को ज़हन रखते हुए, इफ आई टॉक अबाउट द कैटाइंस Na+ एंड H+, तो Na+ ऊपर है, ये Na+ है और ये H+ है, तो H positive ions will discharge at the cathode. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस एट द कैथोड? तो H positive ions gain electrons and the discharge and form hydrogen gas. देखिए जो एनाइंस की सीरीज है, सल्फेट, नाइट्रेट, अक्सर बुक्स में लिखी होगी क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अक्सर में लिखी होगी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड. हम वैसे आपको पेपर में खुद ही बता देंगे कि आपने OH कहां प्लेस करना है. तो क्या पता आपने ये वाली पढ़ी हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, आपने ये पढ़ी हो कि OH सबसे आखिर में होता है. I mean that's fine as well. अगर यहां लिख दिया तब भी it's fine. It doesn't matter. वैसे एग्जाम में कौन सी होती है? रियलिटी में लिखे वो ये वाली होती है, ये रियलिटी है. But we always give you information in the paper. ठीक है सर. Okay, regarding this. और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे बबल्स दिखते हैं, एफरवेसेंस यहाँ होती है हाइड्रोजन गैस की. On the anode, what happens? Since हाइड्रोक्साइड आयंस नीचे हैं, तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज करेंगे. तो हाइड्रोक्साइड आयंस डिस्चार्ज. अच्छा, by the way, 4 OH negative ions that discharge, they give you 2H2O plus O2 plus 4 electrons. Right? So hydroxide ions discharge, they give you water, oxygen and 4 electrons. Basically पता है क्या होता है? Just for information, OH negative ion इलेक्ट्रॉन लूज करता है और OH बन जाता है. अब एक वक्त में एक OH तो नहीं बनता, many OH molecules are produced. तो OH और एक और OH से रिएक्ट करता है and gives you H2O plus O. 2H and 1O combine and form H2O and 1O is lost. अब ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट तो नहीं करता, फिर एक वक्त में एक O एटम तो नहीं बन रहा होता, many O एटम्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो फिर एक O एटम एक और O एटम से मिलते हैं और आपको O2 गैस दे देता है. अब इस सारे को हम इस तरह लिखते हैं
as an equation on the anode. So you see the bubbles of colorless gas at the anode as well, like you saw at the cathode. Is that so? Now, अब अगर मुझे यहाँ पे redox equation बनानी हो, ठीक है, मुझे पता है कि ये reduction हो रही है और ये oxidation हो रही है. If I have to make redox equation, तो मुझे electrons balance करने पड़ेंगे. तो मुझे इस equation को 2 से multiply करना पड़ेगा to make these electrons as 4. So if I multiply the equation with 2, so it becomes 4, 4 and 2. Electron कट गए. क्या बचा? 4H positive plus 4OH negative. It gives you 2H2O plus 2H2 plus O2. Are you seeing that? कि hydrogen and oxygen are produced in 2:1. Remember now, whenever hydrogen and oxygen are produced at the anode cathode, they're always produced in 2:1. अगर let's say for example, अगर oxygen 15 cm3 बन रही है तो hydrogen 30 cm3 बनेगी. अगर oxygen 100 cm3 बन रही है तो hydrogen 200 cm3 बनेगी. It's always in 2:1. In fact, अगर आपने गैस कलेक्ट भी करनी हो तो आप गैस कलेक्ट भी कर सकते हैं. And we can make a sophisticated apparatus. So please tilt your screen a bit up. Let's say like this. हमने उसको 2 से इससे मल्टीप्लाई किया ताकि हम उसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर सके ना, क्योंकि जब आप रिडॉक्स इक्वेशन लिखते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हैं दोनों हाफ इक्वेशंस के. वो पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन थे और निचली वाली में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ऊपर वाली को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो क्या आप, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कटने होते हैं अगर आपने रिडॉक्स बनाना हो, तो इलेक्ट्रॉन लॉस इनके हमेशा इक्वल होता है, इसलिए आपने हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. आप इलेक्ट्रॉन्स काट दिए और फिर आपने रिडॉक्स इक्वेशन बना लिया. फिर मैंने आपको ये बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 में होंगे. जब भी किसी इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेंगे वो हमेशा 2:1 में होंगे. इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन 15 cm3 निकल रही है, राइट, तो हाइड्रोजन 30 cm3 निकलेगी. अगर ऑक्सीजन 100 cm3 निकल रही है तो ऑक्सीजन 200 cm3 निकलेगी, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर इन 1:2. लाइक वन. जी सर, ये जो डिस्चार्ज होता है आयंस का, इसके sir. ऊपर कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता? मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है या डाइल्यूट है तो फिर भी रिएक्टिविटी ही डिटरमिन करेगी कि कौन सा आयन डिस्चार्ज हो रहा है. अच्छा, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है ऑन द कैथोड रिएक्शन. ये जो कैटायन है ना, जो कि मेटल आयंस हैं, सो कॉन्सेंट्रेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है मेटल आयन के डिस्चार्ज के ऊपर, लेकिन द कॉन्सेंट्रेशन विल हैव एन इंपैक्ट on the anion, discharge at the anode. Okay. तो सर ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है वो एक आयन को मतलब फेवर कर रहा है, उसके हिसाब से एक आयन डिस्चार्ज हो रहा है, और जो रिएक्टिविटी फैक्टर है उसके हिसाब से कोई और आयन डिस्चार्ज हो रहा है? बिल्कुल होगा ये. अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी शायद कोई और होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में उसको उल्टा कर दिया है. लेकिन ये सिर्फ एनाइन में होगा, यानी कि एनोड पे होगा, ये कभी कैथोड पे नहीं होगा. जो कैथोड पे है, जो रिएक्टिविटी सीरीज कहेगी वही होगा ऑन द कैथोड, आई मीन द कैटायंस. लेकिन एनोड पे कंसंट्रेशन विल प्ले इट्स रोल, लेकिन वो जब आएगा तो आई विल टेल यू. अभी हम सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज ही फॉलो करेंगे बोथ एनोड और कैथोड के ऊपर. ओके सर. सर जी सर जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 4H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होना चाहिए था. नहीं, उसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब तो 4 हो जाएंगे ना. जो पहले इक्वेशन थी 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2. जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2. ओके. यस सर. देयर वी गो. गैस कलेक्ट भी करनी हो तो आप गैस कलेक्ट भी कर सकते हैं. प्लीज. And we can make a sophisticated apparatus.
Let's say like this. यहाँ पे हम गैस चार्ट लगाएं, गैस सिरिंज, यहाँ पे गैस चार्ट, गैस सिरिंज, इज दैट सो? अब मुझे पता है कि ये अगर लेट्स फॉर एग्जांपल NaCl एक्वस है और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे निकलेगी ऑक्सीजन, यहाँ निकलेगी हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसको ज़रा सा एग्जैक्ट करके बना दूँ, एग्जैक्ट करके, तो आई थिंक ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए आपको, लाइक दिस। सो इसको हाफ कर लेते हैं। मुझे एक छोटा सा सवाल है जी। तो ये ऑप्शन, अगर हम क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, सर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो सर एनोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड आएगी? नहीं नहीं बेटा, आप चाहे डाइल्यूट कॉपर सल्फेट करें या कॉन्स्टेंट कॉपर सल्फेट करें, रिएक्शन एक ही तरह की होंगे, क्योंकि सल्फेट और नाइट्रेट जब वो कभी डिस्चार्ज नहीं करते वेदर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। ओके सर, बट सर अगर मोल्टन हो तो फिर करेंगे, ठीक लेकिन वो इक्वेशन आपको नहीं पता, वो हम आपको खुद बताएंगे पेपर में इक्वेशन। सही है सर, ठीक, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। गैस होगी, दिस विल बी द ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस होगी, दिस विल बी द ऑक्सीजन गैस। ये कलेक्टिव ऑक्सीजन गैस, ये कलेक्टिव हाइड्रोजन गैस। Is that so? और अगर आपने कोई अमाउंट ऑफ जो करंट रजिस्टर करना है, तो आप यहाँ पे एमीटर लगा के अमाउंट ऑफ करंट रजिस्टर कर सकते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड एट ईच इलेक्ट्रोड्स। सो अमाउंट ऑफ करंट is directly proportional to the quantities produced at each electrode. जितना करंट ज्यादा होगा उतनी क्वांटिटी ज्यादा होगी, एज सिंपल एज दैट। प्रूफ लेना, प्रूफ ले लें। ये देखें, ऑब्जर्व नाउ, लेट्स सी फॉर एग्जांपल, ये देखें। अब अगर आप देखें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, 4, और फिर ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनती है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनती है, इजंट इट? ट्रेडिशनल कर लेते हैं, चलें इलेक्ट्रॉन रेशियो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर 4 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, राइट, तो यू सी के 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस बनती हैं, इज दैट सो? एंड लेट्स इफ आई आस्क यू कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करे तो कितने मोल हाइड्रोजन गैस बनेंगे? x। तो कैन आई से मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, तो 4x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0.5। और अगर मैं कहता हूँ लेट्स से कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, आपको पता है 24 dm की वॉल्यूम, ठीक है, तो 1 मोल गैस इज इक्वल्स टू 24 dm की वॉल्यूम। तो जब 4 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे तो 2 मोल गैस के बन रहे थे, इसका मतलब है कि 48 dm क्यूब बन रहा था, राइट, हाइड्रोजन गैस का, ठीक। और जब हम मैंने कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हाफ मोल गैस बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 टू हाफ, दैट इज 12 dm क्यूब। तो हमने गौर किया बेसिकली क्या पता है, मोल ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कम हुआ तो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो हो रही है एट ईच इलेक्ट्रॉन वो भी कम हो गई है, इज दैट सो? ना, लेट्स सी इलेक्ट्रोलिसिस
of dilute sulfuric acid. Now इसमें क्या काइंस क्या हैं? H positive और इसमें anions क्या हैं? Sulfate and OH negative. I'm revising it. Gas is equal to 24 dm cube volume. तो जब 4 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे तो 2 मोल गैस के बन रहे थे. इसका मतलब है कि 48 डीएम क्यूब बन रहा था, राइट, हाइड्रोजन गैस का. ठीक. और जब मैंने कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि हाफ मोल गैस बन रहा है, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? 24 टू हाफ, दैट इज 12 डीएम क्यूब. तो आपने गौर किया बेसिकली कि मोल ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस है. तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कम हुआ तो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो हो रही है एट ईच इलेक्ट्रॉन वो भी कम हो गई. इज दैट सो? Now, let's see electrolysis of dilute sulfuric acid. Now, इसमें क्या काइंस हैं? H positive और इसमें anions क्या हैं? Sulfate and OH negative. By the way, H positive and पानी से भी आ रही है, लेकिन बात चुके एक ही है, इसलिए एक लिखना it's fine. Is that so? Now, on the cathode, H positive ion will discharge and give H2 gas. The bubbles of colorless gas will be produced. और anode के ऊपर hydroxide ions will discharge, will give you 2H2O plus O2 plus 4 electrons. So hydrogen is being produced at the cathode and oxygen at the anode, right? अच्छा, बाय द वे यहाँ पे हम एक और बात भी कर सकते थे इस केस में. अगर आप ये देखें कि ना यहाँ पे NaCl वाले केस के अंदर, तो ये यहाँ से डिस्चार्ज कौन कौन हुआ है? तो एक H पॉजिटिव आयन हुआ है और एक OH नेगेटिव आयन हुआ है. तो वाटर के आयन निकली जा रहे हैं और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है. तो कैन आई से सॉल्ट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, एज वाटर के particles are being removed. Okay. Now, so basically, electrolysis of aqueous and sulfuric acid. Now, let's see electrolysis of aqueous compounds. Basically, electrolysis of concentrated, right, as water particles are being removed. यहाँ से I go. Plus O2 plus 4 electrons. So hydrogen is being produced at the cathode and oxygen at the anode. Right. अच्छा, बाय द वे यहाँ पे हम एक और बात भी कर सकते थे इस केस में. अगर आप ये देखें ना यहाँ पे NaCl वाले केस के अंदर, तो ये यहाँ से डिस्चार्ज कौन कौन हुआ है? तो एक H पॉजिटिव आयन हुआ है और एक OH नेगेटिव आयन हुआ है. तो वाटर के आयन निकली जा रहे हैं और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है. तो कैन आई से सॉल्ट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, एज वाटर के particles are being removed. Okay. Now, so basically, electrolysis of aqueous and sulfuric acid. Now, let's see electrolysis of aqueous copper sulfate. इसमें cations कौन से हैं? तो cations are copper ions from copper sulfate and H positive ions from water. Anions are sulfate and hydroxide from water. और ये सेल है, मुझे पता है कि कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, कार्बन या ग्रेफाइट बोल दें, and this is aqueous copper sulfate. Where is a blue solution?
तो aqueous copper sulfate is a blue solution. Okay. And yeah, graphite electrodes and yeah, black. Okay. Now, what happens, everyone? So cations में से कॉपर आयन नीचे हाइड्रोजन से तो कॉपर आयन डिस्चार्ज करेगा. अट्रैक्ट दोनों करेंगे, कॉपर आयन एंड H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट दोनों करते हैं. सॉरी. So basically अट्रैक्ट दोनों करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज भी करता है. So on the cathode, copper ions will gain electron, will discharge from copper. तो यहाँ पे आपको pink deposits of copper will be observed. यहाँ पिंक डिपॉजिट कॉपर के ऑब्जर्व होंगे आपका. तो कॉपर यहाँ पे आगे डिपॉजिट करेगा, राइट. साइमल्टेनियसली सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड will attract the anode, लेकिन डिस्चार्ज कौन करेगा? तो डिस्चार्ज करेगा हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सल्फेट कभी डिस्चार्ज नहीं करता. Right? Now, so basically, on the anode you will see the bubbles of colorless gas. Anode में bubbles of colorless gas होंगे. On the cathode, pink deposits of copper. Now, everyone, are you saying that कि ये जो copper ions थे, जो कि responsible थे उसके blue solution के लिए, since these copper ions are being discharged, तो can I say that the blue solution fades? तो observations क्या आएंगे आपके पास? तो observations will be one, pink deposits on cathode, the bubbles of colorless gas on anode, and blue solution fades. Is that so? यहाँ तो लिख लेंगे. So basically अगर कॉपर के पिंक डिपॉजिट्स हो रहे हैं, फिर ब्लू सॉल्यूशन फेड हो रही है. और वैसे बाय द वे अगर कॉपर आयन में निकल गए, हाइड्रोक्साइड आयन में निकल गए, तो एंड में सल्फ्यूरिक एसिड बच जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगी. जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि H प्लस आयन बचेंगे और सल्फेट बचेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड बच जाएगा बाय द वे. अब अगर यहां से अगर आप गौर करें, अगर ये कॉपर आयन निकल गए, हाइड्रोक्साइड निकल गए, क्या बचा? सल्फ्यूरिक एसिड. Can I say just कि solution becomes acidic? Is it? अगर मैं इसके अंदर लिटमस सॉल्यूशन फेंक दूं तो रेड हो जाएगा. If I add few drops of So have you written bubbles of colorless gas on Yes. on the point two? On the cathode, on the anode, क्योंकि oxygen is a colorless gas, so bubbles of colorless gas are produced at the anode. litmus solution into it, it will turn red because sulfuric acid is being produced. If I make graphs of the cathode anode, But sir, oxygen is a negative. mass of anode, So Again, yeah. see, cathode पर क्यों नहीं जाएगी oxygen? नहीं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन गैस देगा ना, तो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन है, तो वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पे. हाइड्रोक्साइड एनोड पे डिस्चार्ज करेगा तो ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलेगी ना. ऑलराइट. Yes, sir. Great.
mass of cathode, तो एनोड का mass तो constant है, वो तो change नहीं हुआ, लेकिन mass of cathode is increasing. ज़री बात है कि ये वाला जो basically graph है ये zero शुरू नहीं हो सकता, because this mass is the mass of the carbon electrode itself. उसमें copper deposit कर रहा है, तो mass of the cathode will actually increase. Is that so? I'm giving back to that reactivity series. So एक मिनट observe करने please. ठीक है? Now is the right time to state this thing. अब याद रखना है, please भूलना नहीं है. First 5 ions from cations and these 2 ions from the anions. These ions will never discharge in aqueous solutions. These ions never discharge in aqueous solution. अब चाहे वो aqueous dilute हो या concentrate हो, ये ions कभी discharge नहीं कर सकते. These ions will never discharge in aqueous solution. Do not forget it, please. Are you clear? यहाँ तक बात है clear. Everyone, I hope you're learning at your best and integrity is not compromised. I'm working hard, you also work hard with me, and together we'll rise, inshallah. I wish you best of luck. Please keep smiling and keep shining. This was happy learning, and thank you very much. So basically, we left learning on the electrolysis of dilute solution. Now you know that what is reactivity series, and now you know that the first 5 elements, right, of the cations and the first 2 ions of the anions, ये कभी भी discharge नहीं करेंगे in aqueous dilute or aqueous concentrated solution. They will only discharge in molten state. Please don't forget it. And in case of copper, I hope you know that कि यहाँ मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया आपको. जो कैथोड है उसका mass increase कर रहा है, लेकिन एनोड का mass is constant because वहाँ पे गैस निकल रही है. तो वो